औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर जनाब T360 के इलेक्शन स्पेशल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इलेक्शन की आप गहमा गहरियाँ अपनी जगह जारी हैं। तमाम कैंडिडेट जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जाहिर बात है आपको पता है मुकाबला दो बड़ी पार्टियों के दरमियान है, कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी के दरमियान। और लिबरल पार्टी के अंदर जब से मार्क कार्नी साहब तशरीफ लाए उस वक्त से उनकी वेव चली हुई है। अभी पिछले दिनों जो है वो फ्रेंच डिबेट हुई है और आज जो है वो इंग्लिश डिबेट हुई है, तो उसमें बड़े चंद अहम नुकात थे, जाहिर सी बात है। और मुझे नज़र आया, वाज़ेह डिफरेंस नज़र आया दोनों की पॉलिसीज़ के अंदर से, चाहे वो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसीज़ हो, या मिडिल ईस्ट के हवाले से पॉलिसीज़ हो, या किसी और हवाले से पॉलिसीज़ हो। मुझे एक बड़ा वाज़ेह दोनों के दरमियान फ़र्क आया। और जिस तरीके से बैलेंस बात की आज के डिबेट में, मुझे लगता है कि मार्क कार्नी साहब ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे जवाब दिए एज़ कम्पेयर टू पॉलीवे साहब से। खासतौर पे जो मिडिल ईस्ट के हवाले से जो सवाल उठाया गया था, वहाँ बात हुई थी, उसके अंदर बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन ली है पॉलीवे साहब ने। जो उनकी पुरानी लाइन है कि उन्हें पता भी नहीं था वो क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब, जब तक फ़लस्तीनी जो हैं वो ईरान की और हमास की सपोर्ट नहीं ख़त्म करेंगे, और जब तक जो है वो ईरान को इस बात का हक हासिल, इसराइल को इस बात का हक हासिल है कि वो गज़ा के ऊपर बमबारी करता रहे। इस तरह की बात की उन्होंने। फिर उन्होंने थ्रेट भी किया एक तरीके से कि जो लोग यहाँ पर आए हैं मुसलमान, उनको अपने बैक होम की पॉलिटिक्स को यहाँ पर जो है इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वो अपनी पॉलिटिक्स वहाँ छोड़ कर आएँ और यहाँ पर जो है वो कनाडा की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। बहरहाल ये ह्यूमन राइट्स का इशू है और ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन रहा है कनाडा, तो इस हवाले से तो उनको चाहिए था एक बैलेंस बात करते। लेकिन बहरहाल फिर आज की ये डिबेट के अंदर भी जो है उन्होंने ख़ास तौर पे मुसलमान वोटों को अपनी तरफ करने की कोई कोशिश नहीं की है। उन्होंने यूक्रेन के हवाले से भी उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। इस हवाले से बहरहाल एनडीपी और जगमीत सिंह साहब ने और अपना मार्क कार्नी साहब ने दो इस हवाले से तमाम ही मौज़ूआत पे बड़ी बैलेंस बात की है। तो इस हवाले से मुझे पोल यही बता रहे हैं कि मार्क कार्नी साहब जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं और हमें भी ऐसा लगता है कि शायद आने वाले इलेक्शन के अंदर लिबरल जो है वो एक अपनी मेजॉरिटी गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। तो आइए, हमने आज इस मौजू पे बात करने के लिए असद दीन साहब को बुलाया। असद दीन साहब एक फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे शहर के, और जानी मानी शख्सियत हैं। पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर बात करते हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी वो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने फोर्ड साहब को काफ़ी सपोर्ट किया है। इसके अलावा मेयर के इलेक्शन में मैंने उनको काफ़ी सपोर्ट करते हुए देखा है, कैरोलिन पैरिश साहिबा को या पैट्रिक ब्राउन को। तो इस हवाले से जो है वो पॉलिटिकल अरीना के अंदर काफ़ी जानी मानी शख्सियत है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। असद दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर T360 को टाइम देने का। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप जो खिदमात कर रहे हैं, जो मेन इश्यूज़ को पब्लिक के सामने लेके आ रहे हैं, अल्लाह ताला आप उसका अजर अता फरमाए। एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू असद। तो असद, पहले तो हम चले जाते हैं कि 3-4 चीज़ें जिसके ऊपर जो है ना पूरा इलेक्शन बेस्ड कर रहा है, और हमें पता है वो 3-4 चीज़ें क्या है। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, राइट। फिर ट्रम्प फैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, के इस वक्त जो टैरिफ का इशू है, राइट, वो ज़ाहिर एक बड़ा फाइनेंशियल झटका है यहाँ पर कैनेडियंस को, राइट। और दूसरा ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर, आज़ादी के ऊपर जो है एक 51 स्टेट्स की बात की है उसने, उसके ऊपर मसला है। तीसरी जो बात चल रही है यहाँ पर, हाउसेस क्राइसिस के ऊपर बात चल रही है, इमिग्रेशन के ऊपर बात चल रही है। मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त फ़लस्तीन बना हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है गज़ा की जो सूरत हाल है, हर रोज़ बच्चे मारे जा रहे हैं, बमबारी हो रही है, बम्बार्टमेंट हो रही है, उसके ऊपर एक मुसलमानों के अंदर जो है गम गुस्सा होता है। आज भी जो है वो पॉलीवे साहब ने अपनी जो स्पीच थी उसके अंदर कहा है कि जो यहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं उनको फ़ॉरेन के इशूज़ को यहाँ नहीं लेके आना चाहिए। तो उन्होंने थ्रेट किया है मुसलमानों को एक तरीके से कि उन्हें जो है यहाँ के इशूज़ पे सिर्फ बात करनी चाहिए, वहाँ के इशूज़ को वहीं रखें। तो ये एक नज़र आ रहा है कि बड़ी वाज़ेह डिवीज़न नज़र आती है कि एनडीपी और लिबरल्स जो है वो एक तरफ बड़े वाज़ेह तौर पर सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो उन्होंने बैलेंस अप्रोच रखी हुई है। लिबरल ने बैलेंस अप्रोच रखी हुई है, एनडीपी ने तो आपको पता है सपोर्ट करती है। तो एक हमें बड़ा नज़र आया। तो आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आ जाइए कि मुसलमानों के इशूज़ के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या सारी पॉलिटिक्स हमारी इस वक्त फ़लस्तीन के गिर्द घूम रही है? देखिए, इसमें मसला ये है, फ़लस्तीन तो एक स्मॉल चैप्टर है। लोग ये नहीं समझते कि जो ज़ायनिस्ट पॉलिसी है वो फ़लस्तीन से शुरू करेंगे, वहाँ से पूरा मिडिल ईस्ट, ग्रेटर इजराइल का उनका प्रोजेक्ट है। And the other thing is that anybody who tries to oppose that project, they are going to try their best
to weaken those economies and states. Okay. So let's say even, for instance, Pakistan, far away, they will make it an implicit part of their responsibility to weaken those states so they don't have any role in this. So unfortunately, this is an international issue that is being discussed at an international level, which involves China and so many other countries. As far as the Canadian Muslims are concerned, it is a vital issue to us because it is an issue of human rights. It's issue of our faith. It's the third holiest site in Islam. After Makkah, Medina, there's Masjid al-Aqsa. We've had a historical population of people residing there. There have been a number of things over the years, Nakba and all of that. And Muslims, just like the Jews want the state of Israel to be safe and secure, Muslims want their fellow brothers in Palestine to have a safe and secure state. Okay. No, there's a pretty balanced stance. We do not need something extraordinary. We definitely, being a Muslims, our hearts are with and this is a human rights issue as well, right? Our hearts are with our Muslim brother, but लेकिन ये हमारा जो है एक ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा इशू है. कैनेडियन गवर्नमेंट तो चैंपियंस रही है ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के हवाले से, और यही बात मेरा ख्याल है कि जो बाकी पार्टी एनडीपी और लिबरल पार्टी वो इसी के ऊपर उनका स्टांस है कि एज ए ह्यूमन राइट्स की पॉलिसी की जो है वो हम उसके ऊपर जो है फ़लस्तीन के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है उसके खिलाफ अवार्ड है. उन्होंने कहा है कि हमने आर्म एम्बार्गो भी लगाया हुआ है जनवरी से, और बहुत सारी बातें की हैं उन्होंने डिबेट्स के अंदर. तो एक तो ये इशू है. दूसरा जो इश्यूज है, तो क्या मुसलमानों को सिर्फ इसी एक पॉइंट के ऊपर ही पॉलिटिक्स करनी चाहिए सारी? No, it's not, but we have to pay attention to that. If you remember, look, everybody knows I support the Conservative Party. I supported Ford from the get-go. Alhamdulillah, Ford has been very successful. He's taken a balanced approach. He's very inclusive to the Muslim community. Muslims feel very safe and secure in Ontario. The Premier is very close to our community. Our mayors are very close to us, whether it's Caroline Parrish, Patrick Brown, the city of Toronto's Olivia Chow. The Toronto and the Muslims in Ontario are feeling very secure, unlike Quebec. You look at the Quebec Premier and compare him to Ford. That's right. It's a big difference. Yeah. So by supporting Ford, today we are in a very good situation. Okay? You know, just recently I got an email that my children can be opted out of the courses on sexual education, and I said, yes, I'd like to opt out. So those things are happening in Ontario. We can see that we are not having restrictions on halal food, mosques, or whatever things we're looking for. The Premier's office is open to listening to us, and people are moving here in the droves, unlike Quebec. Okay? They're under a lot of stress. Today now hijabs are being banned from schools, from police, from courts. So Ontario is much better for us. So when we're looking at voting now at the federal level, as a Conservative, I have a lot of concerns about Mr. Poilier. Number one is we wanted to have him have a more balanced approach on Palestine. On one hand, he's telling the Muslims, leave your foreign issues at home. On the other side, he's appointed Melissa Landsman as his deputy PM, who has taken pictures with Palestinian Israeli developers who have been accused of stealing properties of Palestinians. So these are very controversial things. You can see he's not been consistent since October 7th. Yes, he's condemning Hamas. We don't have a problem with that. But he should balance his thing and talk about international law, holding people accountable, including Israel, including Netanyahu, and having a balanced approach and statements on humanitarian. There was a covenant, right? There between the Israel and the Hamas last couple of months ago, that there's a ceasefire, right? And all the world say is good, but Israel break that covenant as well. Well, I mean, this is the point. Like Pierre Poilier is giving a blank check to Israel to do whatever they want, and we will support you. I think this has isolated himself from the Muslim community. He's not going to get the votes. I think if you do a survey now, 95% of Muslims are not going to be voting for Conservatives, precisely. The same Muslims voted for Ford, the same 95% voted for Ford, who is Conservative. So when you have a balanced Conservative that takes into account their concerns and their sensitivities in a balanced approach,
you will get a conservative government, whether it's federal or provincial. Pierre Poilievre's another mistake he made, in my personal opinion, humble opinion, is appointing Jenny Burns as a very integral part of his campaign. This is the same Jenny Burns who came up with the snitch line. And we had told him specifically that if you bring in Harper or the snitch line or any of those elements, Jenny Byrne and company, you will fail to win the GTA. Because if you look at the GTA, in a lot of ridings like Brampton, Mississauga, Milton, Scarborough, all the way to Oshawa, Ajax, Pickering, Hamilton, Muslim votes are London, very important. Ottawa. Everywhere we are. Nowhere are the Muslims voting for the Conservatives. Yeah. They've lost Ottawa, they've lost London, they lost Hamilton, they lost Windsor, they lost Mississauga, Brampton, Scarborough. Greater GTA is completely done. Okay. And the other communities are split. Okay. So whereas other communities may be split 60-40, 40-60, the Muslims en bloc is going to the Liberals, and even they've moved over from the NDP, so there's no chance of him getting in Montreal, exactly. In Vancouver, Greater Vancouver, even in Edmonton. I'm seeing in South Edmonton, there's a chance he's going to lose seats. Exactly. He's going to lose seats in Montreal. He's going to lose seats even as many places, absolutely. British Columbia, I will tell you. Yes. British Columbia as well, because the Chinese and other people's votes are becoming the bloc vote, and there is a great chances that other forces will win. So बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना ओवरऑल अगर उसके फेडरल देखें तो जो ट्रूडो के मुकाबले में जो लीडरशिप थी पॉलीवे की वो बड़ी भारी नजर आ रही थी, और ट्रूडो साहब बिल्कुल नीचे जा रहे थे। एक तो उनके लंबा अरसा हो गया था, फिर उनके अपने फैमिलीज इश्यूज थे, फिर काफ़ी स्कैंडल्स थे उनके, उसकी वजह से क्या उनकी लीडरशिप नीचे दब गई थी। लेकिन जब से कार्नी आए तो आप कैसे देख रहे हैं? मतलब मार्क कार्नी आते साथ ही बड़े एक तो तहम्मुल से जवाब देते हैं, आराम से बात करते हैं बड़ी। Carney is a graduate of Harvard. He's the head of the bank of, he was leading the Bank of Canada. He was appointed by Harper. Harper ke daur mein, he avoided the 2008 crisis. As a result, today you find TD, RBC, BMO branches in the United States, where all the banks in US went down. Canadian banks were safe, and they went and took over a lot of the banking industry in the United States today, right? Carney is also very balanced. He's moving towards balanced budgets. He's moving towards getting rid of carbon tax. He's listening to, whereas I think Trudeau went very left, too left. So if you recall when Trudeau came in against Harper, he was going to masjids. He was taking pictures with hijabis. He got the Muslim vote, rallied behind it. First tenure was great. Absolutely, yeah. He got all that. And you know what? And he sent Harper home. Because if you win Ontario, you win Canada. It's the most seat-rich, 122 seats. Basically, 50 more seats, you got a majority government. Right? So he took Quebec and Ontario and he made the majority. Okay? अच्छा मुझे एक बात और बताएं सर, देखेंगे आपको पता होगा ब्रैड रेडी कॉप इधर आए थे, वो दूसरे एक और जो एमपी थे उनको खास तौर पे उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो है ना वो बात करने के लिए, उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाने के लिए उनको जो है ना एक स्पेशल फोर्स बनाई थी कंजर्वेटिव पार्टी ने। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से आके मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बात की, काफ़ी मीटिंग्स की, हमने भी फीडबैक दिया उनको, चीज़ें थी। उसके बाद लेके बड़े वो थे कि हम बिल्कुल इसके अंदर जो है ना आप लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया, वी आर एबल टू कन्विंस आवर लीडरशिप। तो क्या हुआ, यानी कि वो सिर्फ एक ऐसी आर्टिफिशियल कवर था? It's not like that. देखिए कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर काफी लोग want to work with the Muslim community. Okay. They don't want a one-sided approach where it looks like the entire conservative party, APAC, like some form of APAC is controlling them. If you look at Pierre Poilievre, his whole history is in Israel, he's going to synagogues. We don't have a problem with that. The issue is, where is his attendance in the masjids? You know, where is he showing up? He's not showing up. Whereas liberal MPs, they are showing up. And the conservatives are unable to show up because after October 7th, Melissa Lantsman has taken control over the narrative that Palestine is a dead issue, don't talk about it. You know, he went as far as recently saying that those students who are protesting, they might be deported. He has
you know, the conservatives have a policy, they want to open The their same embassy. thing what he mentioned in the today's debate Yes, he as did. well. Yes. He did actually. And he also said that I want to cancel foreign funding to UNRWA. UNRWA is the only agency working in Palestine, and the liberal government said we're giving 100 million. So those conservatives who are listening today, and I am one of them, all of those conservatives today, like Ford is a conservative, he is not supporting Paulier. He's not a fan of his. Patrick Brown is not supporting Paulier. Asad Deen is not supporting Paulier. So the issue is there's a lot of, and I can mention many prominent members of our community, and those even who have seats of power have been told to stay back and silent. Okay? So the current control over the Pierre Paulier's conservatives, and also in the nominations, there was many people that we brought forward that were highly qualified. 25 years they served in CRA. They could have been readily appointed to these seats, but they were just pushed aside. मेरा बहुत एक और क्वेश्चन इस हवाले से है कि before October, November, they are seeing that they are overwhelmingly winning, right? 2/3 majority भी उनके आ सकती थी, नजर आ रहा था, पोल बहुत हाई थे, जब तक ट्रूडो साहब ने जो है वो स्टेप डाउन नहीं किया, रिजाइन नहीं किया, राइट? और वो उसमें आप देखते समझते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए या दूसरी फोर्सेस ने उनके करीब ज्यादा ऑनेस्टली मैं ये बताता हूँ कि अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को बच गए हैं। अच्छा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव जो आ रहे थे वो बहुत, you know, they were at a point where they don't want even concerned about the Muslim vote. They could care less, basically. Now the issue is that the first thing they did is they put in Carney. Carney is the opposite of Trudeau, very financially literate, very worldly aware, has high respect in the G7. So he's going to bring in a more balanced budget policy like Paul Martin. Okay. That's one. Second thing is the Canadians view him favorably to deal with Trump, not Paulier. Okay. So those two things helped us. Number one is the issue of how Paulier is going to deal with the United States. How is he going to deal with the economy? How are the Liberals going to shift towards Europe and other economies? How are they going to build their military? Paulier is losing to Carney 5 out of 6 points. अच्छा, एक और अहम बात कि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट जो है लिबरल के पास सबसे ज़्यादा इस वक्त मुस्लिम कैंडिडेट है जिनको टिकट्स मिले, और इत्तेफाक ये कि इस वेव्स के अंदर जहां पर बहुत सारे वाइट्स कैंडिडेट ने स्टेप डाउन कर लिया था बहुत पहले इलेक्शन से कि हम नहीं लड़ेंगे आइंदे, मुसलमानों का इसमें कुछ मुझे फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। जैसे असलम राना साहब है हैमिल्टन से, राइट? ऑल दो वहां पर हमेशा एक सीट होती थी किसकी, एनडीपी जीतती रही है, वहां पे नेक टू नेक मुकाबला बड़ा जोरी जारी है। इसी तरीके से ये यहाँ पर जो है सबर्ब के अंदर एक और हमारे पाकिस्तानी उनको टिकट मिला है, देयर इज गोइंग टू बी नेक टू, लंदन के अंदर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। You feel के 10-12 सीटें इस दफा आ सकती हैं बड़ी आसानी के साथ। And by the way, this is across Canada. Across Canada, yeah. Okay, you can have maybe 25 Muslim members elected. Yeah. Which is great. The conservatives, like we are hoping that once the election's over, we want to see Jenny Burns gone. We want to see Paulier step down and move away. We want to see Lance. Do you think that they learned the lesson? Because same thing happened from, this is the third consistency lose for them, right? Well, and we are every time expecting, well, you know, and some balanced person so come and we have to take things. responsibility as a community that when this next when Pierre loses, we have to make sure that enough members of our community by design and plan become members of the Conservative Party and ensure that the next member who is elected is friendly to us. अच्छा, नदीम हमारे नदीम अकबर साहब हैं, बड़ी मेहनत की है उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त कंजर्वेटिव के हमारे इस वक्त मिल्टन के अंदर इलेक्शन में राइडिंग भी लड़ रहे हैं, अच्छा मुकाबला कर रहे हैं, स्टिल बड़ी मेहनत की उन्होंने कंजर्वेटिव में कि मुस्लिम्स की आवाज़ सुनी जाए, बड़ी उन्होंने इनरोड्स बनाने की कोशिश की है, तमाम चीज़ें की हैं उन्होंने, बड़ी मेहनत की है और कुछ इनरोड्स बनाई भी उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, क्या आप समझते हैं कि मुसलमान ये सब बिल्कुल ख़त्म हो गया है और पॉलीवे साहब बिल्कुल नहीं सुन रहे, या उन्हें ये पता चल गया कि मुसलमान चाहे हम कुछ भी कर लें हमें वोट नहीं देंगे? No. So the person who sabotaged him is his leader. Okay, as far as I'm concerned. That definitely, you know, he was in a much better position 3-4 months ago. Yeah, definitely. And unfortunately, the leader plays the major role.
If you look at United States, Trump was better than Kamala Harris. Yep. Okay, and he won. If you look at Ford versus Bonnie Crombie, Ford's better. He won. If you look at Mark Carney versus Paulier, Mark Carney's better. If you look at Paulier versus Trudeau, Paulier's better. Yeah. Okay. So right now, they brought a very powerful weapon, Mark Carney, and he is crushing Paulier because he cannot talk about Trudeau. For the past 2 years, he kept talking Trudeau's gone. He cannot talk about the carbon tax. Exactly. And then when you're looking at getting the Muslim votes, he's being exposed for what he is. And that he's very, very biased on one side. He's not showing the balance. So then the Muslim votes, right now you have a better choice in Carney. He looks economically sound. His policies are more balanced than Pierre. Their votes shifted over. Okay. Okay. So असद मिल्टन के अंदर नदीम अकबर हमारे खड़े हो रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को वहां पर? So the reality is that the Muslims here are becoming increasingly aware about their concerns about the Conservative Party, and this is where he will lose his own community votes. The other thing is, Adam is a very strong competitor. And very, very vocal about this Palestinian issue as well. Correct. So he has heard the concerns. Whether he's genuine or not is a different thing. But he is on record, saying things that you would never hear a conservative MP say. Yeah. Okay. So this is the other issue: is that the Miltonian Muslims' voice is getting heard on both sides of the aisle. So that's a good thing Nadeem is there. You have to look at politics from a longer play. Oh, yes, definitely. Okay? Definitely. If you look at Nina Tangri, Tangri lost 1, 2, 3, 4 times. Yeah. So, Nadeem may end up losing this time because the timing wasn't there. I mean, myself personally, I step back because even after I met Pierre, after and before the whole leadership race, I didn't feel he was ready to reciprocate. He's, I think Nadeem got it because he had a very strong position in Milton. But again, Parm was appointed, okay, to the other riding. And Parm is in the fight of his life. I don't think he'll make it. I think Parm is going to... No, but he's still running very good. Yeah, but if you look at the polls, he's behind. Yeah. Good 5 to 6 points. Because Christina, I feel Christina has very less experience. That's one of the reasons. She does, but maybe, people will just like the fact that Christine is running in that riding, and that riding has a lot more non-ethnic votes. Yeah. So they may decide to shift over because... Anyways, Canadians have generally decided that Mark Carney वो बेहतर selection है. ठीक है असद, बहुत अच्छी बात हमेशा आपसे होती है और हम फिर बात करेंगे. हम एक और प्रोग्राम करेंगे आपके साथ और इलेक्शन से थोड़ा पहले करेंगे, उसको देखेंगे क्या सूरत हाल है और उस प्रोग्राम के अंदर हम सारे कैंडिडेट्स के हवाले 1 to 1 जितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं उस हवाले से आपसे बात करेंगे कि और हम डाटा के साथ बात करेंगे. उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने का और हमारे साथ इस प्रोग्राम को करने का बहुत बहुत शुक्रिया. तो नाज़रीन, ये थे असद दीन साहब जो हैं वो मेरे पुराने करम फरमा हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और बड़े सपोर्टर हैं हमारे टोरंटो 360 टीवी के, और हमारे साथ जो है वो बहुत सारे प्रोग्रामों के अंदर हमें स्पॉन्सर भी करते हैं. और कनाडा इधर GTA के अंदर एक बड़ी पॉलिटिकल आवाज़ है और ख़ास तौर पे कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वो बड़ी आवाज़ हैं और बड़ी जेन्युइन बात करते हैं, सच बात करते हैं, चाहे वो किसी को हक पे लगे नहीं लगे. इसी वजह से शायद हो सकता है कि वो कभी इलेक्शन खुद ना लड़ सके, लेकिन बहरहाल उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाती है, लोग उसके ऊपर तबसरा भी करते हैं. तो आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. हमने कोशिश की कि जेन्युइन इश्यूज़ के ऊपर बात करें, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ इस वक्त हैं उसी के ऊपर फोकस करें बजाय इधर उधर फोकस करने के. तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर इस प्रोग्राम एक नए प्रोग्राम नए मौजू के साथ आएंगे. उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम.
Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshe and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. It's coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. Powered by Big Itobi Coke. Eid specials 20% off. Code Toronto11. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshe, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. In today's economic times, you need a serious, experienced leader. Mark Carney and the Liberals have the experience and strength needed to stand up to Donald Trump and his tariffs. From canceling the carbon tax to creating new jobs, Mark Carney and the Liberals have the plan to help the middle class and make Canada the fastest growing economy in the G7. I'm Ruby Sahota, and I'm honored that you have allowed me to serve you. I'm once again asking you to put your trust in me and elect an experienced leader. On April 28th, vote Liberal, vote Ruby Sahota. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel Insurance is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Assalamu alaikum, Sat Shri Akal, Adab, hello to everyone watching. Is federal election which Canadian school choice hai. Ya tar Donald Trump de tariffs de khilaf ਅਤੇ Canada ਦੀ progress ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ fake promises ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ affordable daycare, dental benefits ਤੇ seniors ਲਈ additional GIS ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਅਤੇ liberal government ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ deliver ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਟਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. Team Farhan
को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. TeamFarhan.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. Did you know that staging your home can result in more than 7% return over the list price? Welcome to Sperona's Home Staging and Interior Design, where we transform your houses into dream homes. Our experts meticulously select each element to bring spaces to life, helping buyers envision their future and creating that emotional connection. We have our own transportation and logistical arrangements. No waiting on outside vendors. We ensure a quick turnaround to complete any project efficiently. Let us bring your space to life and help you achieve top dollars for your home, because it's not just about selling a property, it's about creating a future. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. पूरा बनता सपना मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. At Alam Law Firm, we believe that the most important element of every file we work on is indeed the clients themselves, which has resulted in a proven track record of success. Our battle-tested litigation lawyers stand tall in the face of adversity and challenging cases. Our legal team comprises many legal professionals. Every individual deserves dedicated legal representation. For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Attention business owners and corporate. जैसा कोई नहीं किस्मत पे हमको है यकीन, दिल में जज्बा है जीत का, मंजिल को पाना है यही, मैदान में आ तू खेल जरा, खुद की तू अब पहचान बना। कर लो तैयारी है, जीतेंगे अब हम ही, है जिद हमारी है।
Toronto 11. Get your tickets now. Ticketmaster.ca. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. You know, we were always trying how to get a house. Remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416